Hello, Matajuman, you're watching Northeast Express on HornbillTV. The Kuki CSO Working Committee Ukhrul has enforced an indefinite shutdown in parts of Manipur's Ukhrul district, alleging that the state government failed to address concerns over a purported selective economic blockade affecting Kuki inhabited areas. The shutdown came into effect at midnight after the expiry of a 48-hour ultimatum issued by the committee. The organization stated that despite staging protests, submitting memorandums and participating in discussions with the district administration, no concrete measures had been taken to resolve the issue. According to the committee, the agitation stems from alleged restrictions on the movement of essential commodities into Kuki inhabited areas, which it claims have been imposed by certain Thankul and native groups. It added that its counter-economic blockade entered its 10th day on Wednesday. The WCK CSOs Ukhrul further alleged that multiple rounds of dialogue and assurances from the district administration failed to produce any resolution. It also claimed that a meeting convened by the Ukhrul Deputy Commissioner was later cancelled with no follow-up on a proposed online discussion. The committee said members of the student community had joined the agitation demanding the immediate removal of the alleged restrictions. It also issued guidelines regarding the movement of security force convoys, requesting advance information on their tentative schedules and composition. Students of Assam University Silchar on Wednesday staged a protest demanding the immediate repair and reconstruction of the road linking Silchar Medical College and Hospital SMCH with the university campus. The agitating students alleged that the road has been in a deplorable condition for a prolonged period, causing severe inconvenience to thousands of students, faculty members, patients and daily commuters. They said large potholes, waterlogging and poor maintenance have made the stretch unsafe, particularly during the monsoon. Carrying placards and raising slogans, the protesters urged the concerned authorities to take immediate measures to restore the road and ensure safe connectivity. They maintained that repeated appeals had failed to bring any lasting solution. The protest ended after the authorities handed a written assurance stating that necessary steps would be taken to repair the road at the earliest. Following the assurance, the students withdrew their agitation but said they would closely monitor the implementation of the promised work. They also warned that if the repair work does not begin within a reasonable time, they would launch fresh protest. ये हमारे लिए खुशखबरी है कि जो हमने डिमांड किया था वो फुलफिल हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया कि विद इन 10 डेज रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा एंड काम स्टार्ट होगा 9 अगस्त से 9 अगस्त से काम स्टार्ट होगा एंड विद इन 10 डेज काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ही उम्मीद करता हूँ कि विद इन 10 डेज जो रोड का कंडीशन ठीक हो जाए ताकि जो बसेस वगैरह है और ये जो स्टूडेंट्स भाई बहन जो आते हैं रिसोर्स से उनको दिक्कत ना हो। तो यही उम्मीद है कि काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। पक्की सड़क होगी या फिर मिट्टी डाल के छोड़ दिया जाएगा? नहीं, फिलहाल जो गाड़ी चलने के लिए ऐसा बंदोबस्त करके दिया जाएगा। टेम्पररी काम होगा ताकि कुछ दिक्कत ना आए और पक्की सड़क भी होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट फिलहाल अभी जो ऐसा मिट्टी डाल के और थोड़ा पत्थर वत्थर डाल के वो अभी ठीक करेगा। फिलहाल इंजीनियर रोड्स बोरखला एंड कैटेगरी डिवीजन से भी बोला गया है कि अभी टेम्पोररी रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा 9 से विद इन 10 डेज कंप्लीट करेंगे और उसके साथ अगर मतलब जब सेंशन होके आएगा तो परमानेंट पक्का रोड वाला भी काम शुरू हो जाएगा। सर ऐसा क्यों है? स्टूडेंट में इतना आक्रोश देखने को मिला, चक्का जाम करने को मजबूर हो गए? नहीं, अभी देखिए स्टूडेंट्स का जेन्युइन प्रॉब्लम है, सो इज देयर राइट, वो लोग रेस किया है और उसी का वजह से हम लोग भी आए हैं। आज आने के बाद हम लोग भी स्टूडेंट से भी बात किए हैं, उन लोग भी बहुत कोऑपरेट किए हैं। मैं उन लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ। वो लोग भी पीसफुली प्रोटेस्ट किए, कोऑपरेट किए, बात हम लोग को उन लोग को भी बात रखे हैं, हम लोग को भी बात रख के हम लोग म्यूचुअल कंसेंसस में आए हैं। हम लोग तरफ से बोला गया है कि रोड वर्क विल स्टार्ट सून। हम लोग का इंश्योरेंस के भी 9 से स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 10 डेज हम लोग खत्म करेंगे। The Meghalaya Forest Department has intensified its crackdown on wildlife trafficking, seizing 4 elephant tusks and suspected Bangulian scales in 2 intelligence-led operations in Riboy district and arresting 4 people. The operations were conducted by the Nongpo Wildlife Range under the Khasi Hills Wildlife Division with intelligence support from the Wildlife Crime Control Bureau, WCCB. The first operation on July 18, forest officials acted on specific intelligence regarding suspected illegal wildlife trade along the Nongpo Umden Road.
A wildlife enforcement team conducted a search and interception operation at Umwang Road and stopped 2 suspects who matched the intelligence inputs. A search led to the recovery of 4 elephant tusks suspected to be from the Asiatic elephant, Elephas maximus. The 2 accused, identified as Tras Kiamtait and Wilson Kiamtait, both residents of Riboy district, were apprehended at the scene. The wildlife articles were seized and a case was registered at the Nongpo Wildlife Range under the provisions of the Wildlife Protection Act 1972. During the operation, officials recovered 2 polythene bags containing wildlife articles suspected to be pangolin scales. 2 people, Menetik Kamdait and Riboy district and Rupaingti of Assam Kamrup district, were apprehended, while another suspect managed to escape. The suspected pangolin scales were seized and a separate case was registered at the Nongpo Wildlife Range. Further investigation is underway to identify and trace those involved in the alleged wildlife trafficking network. The Meghalaya Forest Department said it remains committed to tackling wildlife crime and appealed to the public to report information related to illegal hunting, possession, transportation of trade in wildlife and wildlife products to the nearest forest office. The work of upgrading Silchar's Meherpur Medical Road into 4-lane has gained further momentum. Demolition work on the acquired land has started from 5th August Wednesday. Prior to that, the administration carried out making in the Birbal Bazaar area and alerted local residents and traders. As part of the project to upgrade the Meherpur Medical Road from 2 lanes to 4 lanes, the administration will carry out eviction and demolition work in phases. Earlier, making was done in Birbal Bazaar area, urging local residents and traders to remove their belongings within the stipulated time. Executive Engineer of the PWT, Aniruddha Nak, was present and supervised the entire operation. The administration has informed that demolition work will be conducted step by step to complete the project quickly and has sought the cooperation of general public for this purpose. Meanwhile, on the written instructions of State Minister Kaushik Rai, Silchar MLA Dr. Rajdeep Roy and the directions of the Deputy Commissioner of Kachar, the roads branch of Silchar PWT has also started repairing the large potholes on the Meherpur Medical College Road. The administration hopes that once the 4-lane work is completed, traffic congestion will reduce and the communication system of Silchar city will become more improved and dynamic. On Wednesday, the Enforcement Directorate ED conducted a major operation in Silchar in a case related to the smuggling of Burmese supari. On this day, the ED investigation team carried out a search operation lasting for hours at the residence of Burmese supari trader Dipankar Dev on Silchar Hospital Road and at the residence of trader Zakir Taluktar in the Jammar Gudam area. According to sources, this operation was being conducted as part of the investigation related to Burmese supari smuggling. The ED team has collected various documents and other information and is continuing the investigation. However, no official statement has been issued by the ED so far regarding the operation. The Regional Institute of Medical Sciences, DRIMS, Imphal, in collaboration with the College of Nursing and the Breastfeeding Promotion Alliance of Manipur (BPAM) observed World Breastfeeding Day Week 2026 with an awareness program at the OPD complex on Tuesday to promote breastfeeding for maternal and infant health. Addressing the gathering, Professor Sharma described breastfeeding as one of the most cost-effective interventions for ensuring healthy child growth and development. He highlighted its role in improving infant immunity, providing optimal nutrition and benefiting maternal health. He urged healthcare professionals, families and the community to actively support optimal breastfeeding practices through sustained awareness, counseling and community engagement. The program featured an exhibition cum awareness session with educational models, demonstration stalls and distribution of IEC materials. Visitors interacted with healthcare professionals and learned about the importance of exclusive breastfeeding. Focus 做法，咁佢哋係只嘅，佢哋係 focus 做嘢就慢慢都可以做嘅，佢哋
family staff, security staff, already maybe a father or going to be a father. I think father also need to know that you need to support the breastfeeding. And can a potential father or maybe grants or something, they also need to know that as a family member, we need to support breastfeeding. So we need to support the mother, as our expert speaker talk about. Now, what we have to do is to strengthen that. And the to implement over there. As a family member, be it a father, be it a grand, be it aunt or auntie or anyone, we need to make it sure that a newborn should be given this breastfeeding. Adugi strength to the I think race is done. Automatically breastfeeding with Toraga and Angunaroi. Then say that the Pratimaniam calculation, which a him the Lama saved only and a Pazana Tambigre. So that's a huge money for a society like us. We have the Lissing Tarat Rachangena, but the Pratimagi calculation of a Togre. Adu Aquina say Aman to the shape of doing is a big number, and if you can save for the child, then a good saving for the family also. As a part of this RIMS big family, faculty, nursing, security, anyone need to give this information public that we can't families in the breastfeeding see information see thank you so much. Thank you. Chief Minister Dr. Manik Shah on Tuesday said that the Teachers Eligibility Test (TET) which continue to be conducted at regular intervals, but recruitment of teachers would be undertaken in phases after assessing the availability of vacancies and the state's financial capacity. Speaking to reporters, Dr. Shah said qualifying the TET and appointment to government services were two separate processes and should not be viewed as synonymous. He said the state government remained committed to conducting the eligibility examination on a regular basis to provide aspiring teachers with opportunities to qualify, while recruitment would be taken up as and when vacancies arose and administrative requirements permitted. Dr. Shah said the government had to maintain a balance between the need to fill teaching positions and prudent financial management. Recruitment decisions, he added, would therefore be based on an assessment of sanctioned vacancies and the state's fiscal position. The Chief Minister's remarks come amid continued demands from TET qualified candidates for early recruitment to teaching posts in government schools. Candidates have been seeking publication of recruitment recommendations and fresh notifications for appointments, citing vacancies in schools. মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রতিটা স্কুলে আমার যাওয়া, যেহেতু আমার এটা বিধানসভা, এই কারণে এখান থেকেই শুরু। একটা জিনিস আমি দেখলাম যে সরকারি স্কুল হলেই একটা মানুষের মধ্যে একটা মাইন্ডসেট থাকে, সরকারি হাসপাতাল যেরকম আমি বলি প্রায় এরকম ছিল, এখন তো অনেকটা উন্নত হয়েছে। তো স্কুলগুলো যেন এত খরচ হয়, টিচারদের বেতন থেকে আরম্ভ করে স্টাফ থেকে আরম্ভ করে, আমরা যে ভাবে তাদের বেতন কাঠামো রয়েছে, প্রাইভেট স্কুলগুলো কিন্তু এর থেকে অনেক অনেক কম, তারপরেও ওরা কিন্তু মেনটেন করে। আমি এটাই বললাম, আমি আমাদের ডিএম সাহেবও ছিলেন, আমাদের স্কুল এডুকেশনের যিনি ডাইরেক্টর, ওনারকেও আমি বলেছি এটা আপনি একটা মডেল স্কুল বানান, যাতে সব কিছু দরজার থেকে জানালার থেকে আরম্ভ করে পরিষ্কার, স্টুডেন্টদের বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড, এখন তো অনেক স্মার্ট ক্লাস চলে এসছে, এইভাবে করে এটা মানে সুন্দর একটা স্কুল আপনি মডেল স্কুল বানান। এইটাকে একবার করার পর দরকার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এজেন্সি লাগান, এজেন্সি দিয়ে এটাকে একটা বানিয়ে আমাকে দিন। এই মডেল স্কুলকে দেখে অন্যান্য স্কুলগুলোও সেভাবে করব। আমি সেটাই বললাম, পড়াশোনা তো আছে, পড়াশোনার সাথে সাথে সুন্দরতার বিষয় রয়েছে, একটা পরিবেশের বিষয় আছে। এখানে যেমন প্রধান শিক্ষিকা যিনি আছেন উনি বলেছেন যে প্রেয়ারের সময় বাচ্চাদের রৌদ্র লাগে, আমি বললাম এগুলো তো এখন সুন্দর, আমরা যে ট্রান্সপারেন্ট শিট লাগে এগুলো আরামসে করা যায়, এগুলো করে দেবো। পাশাপাশি টিচারদেরকে নিয়েও আমি ফুল টিচার্সদের নিয়েও বলবো
যে আপনারাও কিছু পরিশ্রম করতে হবে। স্টুডেন্টদেরকেও আমরা স্বচ্ছ ভারত অভিযান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে করেছেন, স্কুলকেও পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের জন্য তাদেরকেও লাগানো যায়, এরকম না যে এটা তাদের ভালোর জন্য। এটাকে নিয়ে এখন অনেক সময় বলে আমার ছেলে মেয়েকে পরিষ্কারের জন্য লাগিয়েছে, এরকম না। এটা অনেক সময় একটা অনুষ্ঠান বা একটা ডে সামনে রেখে এটা যদি অন্যান্য যেসব আমি দেখেছি প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন এগুলো করে, ভালো জিনিসটা আমরা গ্রহণ করা উচিত। এবং এখানে বাউন্ডারি হচ্ছে, এবং বাউন্ডারির পাশাপাশি অনেক দিনের দীর্ঘ সমস্যা ছিল, বাউন্ডারি নেই, বাইরের থেকে লোক চলে আসে, পাশাপাশি এখানে গ্যালারি হচ্ছে। তো এই বিষয়গুলো যারা ইঞ্জিনিয়াররা ওনারা দেখিয়েছেন, তো ওনারা বললেন যে পুজোর আগে করলে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে, পুজোর পরে কাজটা শুরু করবে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটা করবে। পূজার আগে একটা অডিটোরিয়ামের কথা ওরা বলেছিলেন, অডিটোরিয়ামটা আমরা দিয়েছি, যা বলছে তাই দিচ্ছে সরকার। বিধানসভার অন্যান্য স্কুলগুলোকে কি যাবেন না? এইভাবে আমি এটা দেখলাম, এটা তো বললাম অন্য যে আমার বিধানসভা না, অন্যান্য বিধানসভায় আমি যখন যাব ভাবছি ওখানেও গেলে অনেকটা বোঝা যায়। তো সব জায়গায় যেন সেইভাবে হয় সেই চেষ্টাই করব। সময় কম কিন্তু কাজ বেশি, করবো, নিশ্চয়ই করবো। Weeks after a sudden and violent flood devastated parts of Assam's Sivasagar district on July 19, many families remain displaced, forced to survive in makeshift tents on higher ground near the Bhiopur daily market. Kirpan Kurmi and his family, including his wife and 2 sons, had spent several sleepless nights following the loss of everything in the July 19 devastating flood, and the family is now taking shelter on higher ground near the Bhiopur daily market area in Assam's Sivasagar district by making a small makeshift tent. Bhiopur, Nepali Ghutti, Bihari Basti and Railway Ghat are among the worst affected areas in the July 19 flood in Sivasagar district. आपका नाम? मेरा नाम किरपन कुर्मी है। हाँ, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब बरसात का पानी तो देता ही था दिन रात, कम से कम 13-14 घंटा बरसात एक ही राहत दिया था। तो हम लोग सोचता बरसात का पानी है बोल के इस तरह से आएगा बोल के कोई नहीं सोचता है। तो हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर में बैठा हुआ है, बरसात का पानी, वो लड़का लोग मछली इसलिए पकड़ता पत्थर पे, अचानक पानी आके सब तरफ से घेर दिया। हम लोग जितना घर में जितना सामान था सब एक के झटका में ले गया। घर का ऊपर कुछ टीला था, तो उसी में मुर्गी हांस थोड़ा उठाया, कपड़ा वपड़ा उठाते, पानी दोनों बूढ़ा बूढ़ी का इतना पानी हो गया, निकलने का चांस ही नहीं मिला। उसका बाद वो लड़का लोग देखा दूर से तो आके सातुर मार के, ये तो 2 बार डूब गया था, इसका जैसे तैसे हाथ में पकड़ के वो टीला में उठाया, बाद में वो लड़का लोग पार किया। और आग के सामने जितना मतलब कमाया था, जो जवानी से कमाया था, सब एक झटका में 1 सेकंड में चला गया। 1 सेकंड में कुछ नहीं रह गया, सिर्फ इसका 1 जोड़ा कपड़ा और हमारा लड़का का 2 जोड़ा कपड़ा और हमारा एक पेन, एक गेंजी, ऐसा गेंजी एक तो पहन के निकला, और कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। हम लोग आप क्या करेगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा गुटी एक लड़का का पढ़ाता है जैसे तैसे, वो हाथ बड़ी भी ठीक नहीं, हमारा 1 चक्कू से भी देख नहीं सकता है, 1 चक्कू में एक्सीडेंट में खराब हो गया। 1 चक्कू है हमारा काम करता है, उसी को कमा के जैसे तैसे हाजरा करके लड़का का पढ़ाता है। और एक तो इधर उधर काम करता है जंगल उंगल में, बड़ा वाला लड़का, बस वैसे ही गुजारा चलता था जैसे तैसे। हम तो भविष्य में लड़का का पढ़ाएगा बोल के सोच के थोड़ा कुछ रखा था, गोरू छागली जो भी था वो सब चला गया। अब क्या करेगा, बच्चा का कैसा पढ़ाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। सरकार को यही अनुरोध है हम लोग का कुछ देखने के लिए, और घर द्वार थोड़ा बना देने से फिर बच्चा लोग कर लेगा। अभी तो हमारा समय भी नहीं है करने का, जो करके रखा था तो चला गया, अब क्या करेगा हम लोग। अभी बूढ़ा बूढ़ी तक इस समय में कमाता नहीं सकता है, बच्चा लोग का भविष्य अपना वो लोग कर लेगा, कैसा करेगा वही लोग जानता है। अभी तो हमारा भी शक्ति नहीं, घर द्वार तो सब चला ही गया, जो हांस मुर्गी छागली था, जो पूंजी कपड़ा लता तो सब चला गया, 1 सेकंड में सब खत्म, जीरो कर दिया हम लोग का।
यही और क्या बोलेगा, यही कैम्प में भी रहता है, ऐसे ही सोता है। अब 16-17 दिन हो गया ऐसे ही सोता है, कपड़ा लता तो है ही नहीं, ये जो इधर उधर से मिला है। Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nada on Wednesday visited flood-affected areas in Assam's Sivasagar district along with Chief Minister Himanta Biswa Sarma and assured residents that the centre would extend all possible assistance for relief, rehabilitation and reconstruction. Nada visited the flood-ravaged Bihupur Nepali Kuti area, interacted with affected families and reviewed the damage caused by the recent floods. The Union Minister also took stock of the ongoing relief operations and the rehabilitation measures being undertaken by the state administration. Addressing flood-affected residents, Nada said the central government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, stood firmly with the people of Assam. Speaking after inspecting the affected villages, Nada said the visit gave him a first-hand assessment of the devastation caused by the floods. The visit comes as several parts of Upper Assam continue to recover from one of the worst flood spells this monsoon. Sivasagar district, particularly the Nazira subdivision and the bordering Bihupur Nepali Kuti area, witnessed extensive flooding, land erosion and large-scale damage to agricultural land after incessant rainfall and overflowing rivers inundated villages. मुझे आज यहाँ शिवसागर में विभुवर पंचायत में यहाँ नेपाली कोठी में आने का मौका मिला। मुख्यमंत्री जी के साथ मैं देख रहा हूँ कि कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो मौन के तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस दुख भरी घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, भारत सरकार आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे यहाँ जायज़ा लेने के लिए भेजा है। मैंने यहाँ सारी स्थितियों का हेमंत विश्व शर्मा डांगोरिया जी के साथ इसकी चर्चा की है। शाम को बैठ कर के आगे किस तरीके से योजना बन रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने रिलीफ का काम जो बचाव के दृष्टि से आवश्यक है उसके लिए बहुत तत्परता से और प्रोएक्टिव होकर समय को ध्यान में रखते हुए पूरी तीव्र गति से यहाँ राहत पहुँचाने का काम किया है और राहत का कार्य बहुत तीव्र गति। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.